हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वर्ड क्लासेस की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस ये समझने के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे और इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। अब हम उन वर्ड्स को मुख्तलिफ नेम देंगे और जब नेम देंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इन वर्ड्स का क्यों ये नाम दिया गया है और इसकी रीज़न क्या है, और फिर हमने उसको मज़ीद आने वाले सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है आई। आई आई इज़ अ प्रोनाउन। आई इज़ अ प्रोनाउन। आई इज़ अ प्रोनाउन। नेक्स्ट इज हैव। Have is a verb. Next is an. An is a determiner. Next is important. Important is an adjective. Next is conference. Conference is a noun. At is a preposition. Next is work. Work is also a noun. Tomorrow is an adverb. So is a linking word. We may call it conjunction. I is pronoun. Am is a verb. Rather is an adverb. And next is busy. Busy is adjective. So we saw that in a single sentence we have different parts of a sentence. In this sentence, I have an important conference at work tomorrow, so I'm rather busy. We picked out different parts of this sentence. For example, I is pronoun, it is a part. Have is a verb, it is also part. Similarly, busy is also part of sentence and is parts of speech and is called adjective. So we can call these red words as word classes or parts of speech. Parts of speech. So in this lesson we have just introduced parts of speech. In the next lesson we will study these parts of speech thoroughly. Thanks for watching. Have a good day.